Good morning, good morning, good morning everyone. कैसा चल रहा है बाबा? चलो कुछ डाउट है हाइड्रोग्राफ के बारे में, कुछ डाउट है प्रीवियस क्लास का? एनी डाउट्स आर यू हैविंग रिगार्डिंग हाइड्रोग्राफ इन द प्रीवियस क्लास? गुड मॉर्निंग लक्ष्मी गारू, हाउ आर यू? बोलो फटाफट। कुछ डाउट होगा तो पूछ लो फटाफट। एनीवन हैविंग द डाउट? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? चलो देन, नो डाउट्स ना? नो डाउट्स ना, विल मूव ऑन। डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। गुड मॉर्निंग कुणाल, मिस अंकुल, गुड मॉर्निंग, हर्षि गारू प्रणाम। A direct runoff hydrograph is also called effective rainfall hydrograph. Effective rainfall hydrograph, both are same. Direct runoff hydrograph or effective rainfall hydrograph, both are same. So generally this is our flood hydrograph, storm hydrograph. No? Discharge of flood on y-axis, time on x-axis. Discharge of flood on y-axis, time on x-axis. ये तो हमारा रेगुलर फ्लड हाइड्रोग्राफ बोलते हैं इनको, ये तो रेगुलर होता है। नाउ बेस फ्लो सेपरेट करना पड़ेगा, बेस फ्लो सेपरेट करना पड़ेगा। सो दिस विल बी टेकन एज ए, दिस विल बी टेकन एज ई। सो हम ये सब बेस फ्लो सेपरेट कर लिया। देखो, वी हैव सेपरेटेड बेस फ्लो लाइक दिस। व्हाटएवर प्रेजेंट एट द बॉटम, नीचे होने वाला क्या होता है, नीचे होने वाला को व्हाटएवर प्रेजेंट एट द बॉटम इट कैन बी से बेस फ्लो, व्हाटएवर प्रेजेंट एट द टॉप वी कैन से डीआरओ, होता है ना। नाउ this is the time where you achieve peak discharge. The time of peak discharge to end of BRF. Time of peak discharge to end of BRF. We call this as N. N in terms of days. Time of peak discharge to end of BRF. N in terms of days. 0.83 into A power 0. 0.83 into A power 0. What is A? A is catchment area. Catchment area in kilometers square. इन किलोमीटर स्क्वायर। ये इज कैचमेंट एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर। ये देखो, यहां से यहां क्या बोलते हैं इनको, टाइम। टाइम स्केल में फ्रॉम हियर टू हियर व्हाट वी कैन से, व्हाट वी कैन से फ्रॉम टाइम स्केल फ्रॉम स्टार्टिंग टू दैट पॉइंट। अरे फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ रेनफॉल बोलते हैं। सो व्हेन यू टेक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ये, 1 मिनट, वी आर नॉट टेकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग, वी टेक फ्रॉम ये। ओके, नाउ यू गेट मोर क्लैरिटी, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। आपका फ्रस्ट्रेशन समझ आ गया। ये टू दिस पॉइंट, टाइम टू पीक। ये टू दैट पॉइंट इज द टाइम टू पीक, पीक टाइम। स्टार्टिंग से नहीं, ये टू ले रहा है, ये टू पॉइंट, ये टू ले रहा है टीपी। टाइम टू पीक डिस्चार्ज टीपी के, टाइम टू पीक डिस्चार्ज इज टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बाई प्लस डी बाई टू, टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन प्लस डी बाई टू। टाइम टू पीक, टाइम टू पीक इज टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन प्लस डी बाई टू। व्हाट इज दी ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल? डी होता है रेनफॉल ड्यूरेशन, डी होता है रेनफॉल ड्यूरेशन। पीक टाइम इज इक्वल टू टीसी प्लस डी बाई टू। टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पता है ना बेटा, टीसी इज टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, बोल दिया ना ऑलरेडी। टी पीक इज पीक टाइम बिटवीन टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन प्लस डी बाई टू। चलो हम तो ये बेस फ्लो तो सेपरेट कर दिया। वी हैव सेपरेटेड दिस बेस फ्लो, वी हैव सेपरेटेड दिस बेस फ्लो। ऊपर वाला क्या होता है, डायरेक्ट रन ऑफ, डायरेक्ट रन ऑफ। नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू प्लॉट फॉर इट। नाउ आई हैव सबट्रैक्टेड द वैल्यूज, आई हैव सबट्रैक्टेड द वैल्यूज ऑफ बेस फ्लो। सो क्यू डी आर वो कैसा आता है, हेलो जुबिया, गुड मॉर्निंग। क्यू डी आर वो क्यू एफ एच माइनस बेस फ्लो होता है ना बेटा, क्यू एफ एच माइनस बेस फ्लो, क्यू एफ एच माइनस बेस फ्लो। So now it starts from 0, ends with 0 ना, it starts with 0, ends with 0 ना बेटा। डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ स्टार्ट विथ 0, एंड विथ 0। देखो एक बार, 0 से शुरू करेगा, 0 से एंड हो जाएगा। देखो एक बार क्या हो गया, हम ये ले रहा है बस, ओनली वी आर टेकिंग दिस रीजन, वी आर नॉट एट ऑल टेकिंग एनी अदर रीजन। हम सिर्फ ये रीजन ले रहा है, वी आर ओनली टेकिंग दिस रीजन। नो नो, रेनफॉल ड्यूरेशन को कोई दिक्कत नहीं इधर। रेनफॉल के बाद 10 घंटा 12 घंटा भी हो जाएगा, देयर इज नो रेनफॉल कंडीशन।
अरे कल नहीं देखा क्या इमरान गारू? वी डिस्कस द फर्स्ट क्लास ऑफ हाइड्रोग्राफ. यस निपुण, ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये तो होता है निपुण गारू. दिस इज अ टाइम बेस्ड ड्यूरेशन बोलता है बेटा. दिस वी कॉल इट एज अ टाइम बेस्ड ना. यहां से यहां क्या हो गया? टाइम बेस. टाइम बेस. दैट टाइम बेस इज इक्वल टू टीबी टी पीक प्लस एन. टी पीक प्लस एन निपुण. टाइम बेस टीबी इज इक्वल टू टी पीक प्लस एन. अरे एफएच फ्लड हाइड्रोग्राफ डिस्चार्ज ऑर्डिनेट ना. क्यू फ्लड. आदर्श गारू फ्लड हाइड्रोग्राफ डिस्चार्ज ऑर्डिनेट. इनका वजह से हम बोल रहे, बार बार आपको बोल रहा है, पहले क्लास इंपॉर्टेंट है, पढ़ो बेटा, रिवाइज करो. बहुत अच्छे से लिख दिया पहले क्लास में, इतना अच्छे से लिख दिया, चेक करो. एफएच, एसएच, स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ, फ्लड हाइड्रोग्राफ लिख दिया या नहीं? चलो कंप्लीटेड. इमरान समझ आ गया? इमरान गारू हेलो पीयूष, गुड आफ्टरनून. The hydrograph for effective rainfall. The hydrograph for effective rainfall obtained after subtracting base flow from total flood. Obtained after subtracting base flow from total flood and plotted direct runoff versus time is called as direct runoff hydrograph, DRH. Direct runoff hydrograph, DRH, or effective rainfall hydrograph, ERH. Both same beta. Direct runoff hydrograph, DRH, effective rainfall hydrograph, ERH. You need this one, Himanshu? So देखो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऐसा ड्रा कर रहे हैं हम. देखो एक बार, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ वी आर गोइंग टू प्लॉट लाइक दिस. So when you plot from this point, A will be zero na time for direct runoff. It starts from time A, n set time E. Starts at time A, n set time E. So it looks like an inverted U-shaped curve. So that is the reason it looks like inverted U-shaped curve. So now that inverted U-shaped curve, that is direct runoff hydrograph. We are entering into most important part of. ध्यान से सुनो, the numerical part where we have to get so many numericals on this and basic starting model of hydrograph numerical. Starting model of hydrograph numerical. So why we are going to plot hydrograph? First reason why we are going to plot hydrograph. Estimation of volume of runoff. This is first target. Estimation of volume of runoff. कहा? Into catchment. Catchment का अंदर ना. Estimation of volume of runoff कहाँ enter हो रहा है? कहाँ enter हो रहा है? Estimation of volume of runoff into catchment. Because of how many rainfalls? Because of how many rainfalls? By one storm. One rainfall na? By one rainfall na? Estimation of volume of runoff into catchment by one storm. It has two methods. This volume of runoff estimation has two methods. One you can say from catchment. Second one you can say from hydrograph. दूसरा वाला hydrograph से आएगा, पहले वाला catchment से आएगा. There are two possibilities for estimation of volume of runoff. Estimation of volume of runoff either from catchment or from hydrograph. Catchment से कैसा आएगा? Volume of runoff. Catchment से कैसा आएगा? We have solved so many questions. Area of catchment into क्या बोलते हैं? Into effective rainfall depth. Area into depth होता है ना बेटा? Volume of runoff. Only effective rainfall, Madhu. Only effective rainfall. Don't say total rainfall. Total rainfall we can't take. Effective rainfall we have to take it. Volume of runoff is equal to runoff. We are talking not rainfall volume. Runoff we are talking not rainfall volume. So that area of catchment into effective rainfall depth. A into ERF. We can say this as A into AC. Area of catchment AC. Area of catchment AC into ERF. ERF depth. So now how you can get ERF depth? How you can get effective rainfall runoff depth?
पता है आपको? पता है? बोलो रन ऑफ डेप्थ कैसा आएगा बेटा? अरे हम डेप्थ पूछ रहा है निपुण जी, डेप्थ पूछ रहा है, डेप्थ डेप्थ पूछ रहा है ना, रन ऑफ डेप्थ। वेरी गुड इमरान भैया, नाइस। प्रेसिपिटेशन माइनस 5 इंटू टी। अरे फिल गारू, ये वॉल्यूम पता नहीं हमको। फिल जी, ये वॉल्यूम तो पता नहीं, ये वॉल्यूम निकलने के लिए ये चाहिए, सो दैट यू कैन गो विद दिस ना, सो दैट यू कैन गो विद दिस ना, P minus 5 into T. Effective rainfall depth is equal to P minus 5 into T. होता है ना बेटा? चलो ये तो आ गया वॉल्यूम। एंड नाउ फ्रॉम हाइड्रोग्राफ कैसा बोलते हैं? फ्रॉम हाइड्रोग्राफ एरिया ऑफ हाइड्रोग्राफ, यू मेजर द एरिया ऑफ द शेप गिवन ना, शेप एरिया, हाइड्रोग्राफ का शेप मिलेगा हमको, ये हाइड्रोग्राफ एरिया ले लो, एरिया ऑफ हाइड्रोग्राफ गिव्स वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल रन ऑफ, वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल रन ऑफ, एंड बोथ विल बी इक्वल होना चाहिए। देखो दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, दोनों दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ फ्रॉम द कैचमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ हाइड्रोग्राफ इट शुड बी obtained gives वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल। ये बात करेगा कैसा होता है। सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, अभी आ गया क्या टीटी बोल रहे हैं, अभी जाइन किया आप, अभी कितना दे दिएगा आपको, और किसी को टीटी चाहिए बोलो बेटा, जस्ट नो यू कैन। सत्ती गारू आपको ये अच्छा नहीं है, अच्छा बात नहीं। हो गया? So now for a triangular डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, वो मैं बोल दिया आपको, इंटर्नशिप में ऐसा टाइम वेस्ट मत करो, बार बार बोल दिया आपको। सो वी गॉट ए ट्रायंगुलर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। सो देखो बेटा, ट्रायंगुलर नहीं आएगा, प्रैक्टिकली ड्रा करने के बाद ये शेप भी आएगा। व्हेन यू आर प्रैक्टिकली थिंक अबाउट ए डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ऑब्वियसली ये शेप भी आएगा। बट हमको एग्जाम में क्या दे रहे हैं, एग्जाम में ट्रायंगुलर शेप, ट्रेपेजॉइडल शेप दे रहा है। सो इनका वजह से हम लिख रहे हैं ट्रायंगुलर शेप आ गया तो क्या करेंगे, सिर्फ एक एग्जाम के लिए ले रहे हैं हम। क्यू डी आर वो वाई एक्सिस, टाइम एक्स एक्सिस, क्यू डी आर वो we are taking in meter cube per second, QDRO we are taking in meter cube per second, y axis, time in x axis, time in hours in x axis. So now we are going to have a triangular, बोल दिया ना triangular, ऐसा आ गया हमको एक यूनिट हाइड्रोग्राफ आ गया ऐसा, ट्रायंगुलर यूनिट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ट्रायंगुलर हो गया ना, ट्रायंगुलर यूनिट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बोल दिया। ओके, दिस वन नाउ हियर टू हियर तो टाइम बेस होता है, टाइम बेस टीबी, एंड दिस इज द वैल्यू पीक डिस्चार्ज, पीक क्यू पीक। सो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू टेक, व्हाट आर वी गोइंग टू टेक नाउ, वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल, वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल इज एरिया ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। व्हाट इज एरिया, हाफ इंटू टाइम बेस इंटू पीक डिस्चार्ज होता है या नहीं, हाफ इंटू टाइम बेस इंटू पीक डिस्चार्ज, दैट इज वॉल्यूम। ये बात तो सुनो, दिस इज इन आवर्स, दिस इज इन मीटर क्यूब पर सेकंड, सो 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ 60 इंटू 60, गुड मधु, 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल इज इक्वल टू एरिया ऑफ डीआरएच, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू टीबी इंटू क्यूपीके इंटू 3600, एंड दैट इज इक्वल टू विच, ये किसको इक्वल होता है बेटा, ये खत्म हो गया, कंप्लीटेड राइटिंग दिस, कंप्लीटेड राइटिंग दिस, बोलो फटाफट। स्लोप गारू कैसा है, पीपी को बैन करो। सो हाफ इंटू टाइम बेस इंटू पीक डिस्चार्ज मल्टीप्लाई विद 3600 इज इक्वल टू, किसको इक्वल होता है, एरिया ऑफ कैचमेंट इंटू, गुड मुसाविर, इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ, एरिया ऑफ कैचमेंट इंटू इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ। ये तो यूनिवर्सल फार्मूला है बेटा, स्टार मार्क लगा दो, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पक्का क्वेश्चन तो आएगा ये फार्मूला, दिस मेनी स्टार्स। आपको ये कहा टेक्स्ट बुक में, कहा नोट्स में नहीं मिलेगा, दे विल से स्टेप वाइज सॉल्व करो, स्टेप 1 टाइम बेस निकालो, स्टेप 2 पीक डिस्चार्ज निकालो, स्टेप 3 वॉल्यूम निकालो, देन वॉल्यूम इज इक्वल टू इफेक्टिव रेनफॉल इनटू एरिया, ऐसा करो। ये पूरा बंद करो प्लीज, इतना ज्यादा स्टेप्स नहीं चाहिए, फार्मूला ले लो,
हाफ इंटू टीबी इंटू क्यूपीके इंटू 3600 इज इक्वल टू एसी इंटू ईआर। एक फार्मूला में पूरा खत्म। फोर प्रॉपर्टीज आ गए हमारे पास। कौन फोर प्रॉपर्टी? टाइम बेस, पीक डिस्चार्ज, एरिया ऑफ कैचमेंट, इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ। फोर में तीन दिएगा एग्जाम में, फोर्थ वन यू नीड टू फाइंड आउट। समझ आ रहा है बेटा? टाइम बेस, पीक डिस्चार्ज, रेनफॉल डेप्थ गिवन टू यू। आप एरिया को निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ कैचमेंट को निकालना पड़ेगा। टाइम बेस, पीक डिस्चार्ज, एरिया गिवन टू यू, आप इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ को निकालना पड़ेगा। सो आउट ऑफ 4 गिवन टू यू, आउट ऑफ 4 3 गिवन टू यू, यू नीड टू फाइंड आउट फोर्थ वन। क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व वन क्वेश्चन, समझ आएगा आपको पूरा। अरे ऐसा कैसा ले लेंगे रे बाबू? एरिया ऑफ कैचमेंट मीटर स्क्वायर, इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ इन मीटर, ऐसा भी लेना पड़ेगा ना। जीरो, इधर टाइम दिया 20 आवर्स, इधर टाइम दिया 40 आवर्स, and this is given 70 meter cube per second, 70 meter cube per second. Area of catchment we need to find out in kilometer square. Area of catchment we need to find out in kilometer square. Rainfall is 8 centimeter, duration 4 hours, phi value 0.5 centimeter per hour. This is the question given to you. Area of catchment in kilometer square निकलना पड़ेगा। Rainfall precipitation 8 centimeter, duration of 4 hour, phi is 0.5 centimeter per hour. So when you start solving, पहले तो effective rainfall depth मिलेगा 8 minus 5 into t, 6 centimeter ना। 8 minus 5 into t, 6 centimeter ना। Now we are taking half, time base 40 hours, peak discharge 70, 3600 is equal to area required into 6 into 10 raised to minus 2, 6 into 10 raised to minus 2, because this is in centimeter, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपको आएगा एरिया ऑफ कैचमेंट इन मीटर स्क्वायर, ये बोलो पहले। एरिया ऑफ कैचमेंट मीटर स्क्वायर, ये बोलो पहले। 84 into 10 power 6 मीटर स्क्वायर, क्या है क्या? सो 84 किलोमीटर स्क्वायर। निपुण जी कहां गलत किया, चेक करो निपुण गारू। 84 किलोमीटर स्क्वायर बोल रहा है। बहुत स्लो लग रहा है, क्योंकि ये स्लो में चलना पड़ेगा। जल्दी जल्दी करने के बाद समझ में नहीं आ गया तो फाइनल एग्जाम में गलत हो जाएगा बेटा। ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिमाग स्लो लग रहा है, दिमाग में क्या हो गया रे बाबू? XYZ घुस गया, XYZ घुस गया। अरे एनी रीजन क्या होता है नवनीत? हम क्या कर रहे हैं नवनीत भैया? इधर डिस्चार्ज इनटू टाइम ओनली कर रहे हैं ना नवनीत। व्हाट इज डिस्चार्ज इनटू टाइम नवनीत गारू? डिस्चार्ज इनटू टाइम वॉल्यूम हो गया कम, बट डिस्चार्ज इज वेरिंग। कैसा? ट्रायंगल जैसा वेरिंग। इनका वजह से ट्रायंगल एरिया ले लिया। समझ आ रहा है? हर एक डिस्चार्ज नहीं ले लिया ना आप। Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ऐसा नहीं ले लिया, एक वैल्यू ले लिया बस, सिंगल वैल्यू ले लिया बस। सो इनका वजह से ऐसा होता है ना बेटा। चलो ये निकलना पड़ेगा अभी। एरिया ऑफ कैचमेंट 250 किलोमीटर स्क्वायर, रेनफॉल इन सेंटीमीटर, रेनफॉल ड्यूरेशन 6 आवर्स, 50.3 सेंटीमीटर पर आवर। कैन यू सॉल्व? कैन यू सॉल्व?
half into 60 into 90 into 3600, 250 kilometer square, 250 into 10 power 6 into ERF. So what is ERF? ERF is 5.688 centimeter. यार क्या? ERF value बोलो then. ERF 3.88 centimeter. Good. Then P is equal to ERF plus 5 into T. 3.88 plus 0.3 into 6. समझ आ गया बाबू? चलो so this is first case खत्म हो गया. first case. second case है trapezoidal direct runoff hydrograph. so second shape है वो trapezoidal direct runoff hydrograph. second shape we are talking. so this is happening. this is taken as B. A. This time base is taken as A. This time base is taken as B. And this will be considered as QPK. अब तो एरिया ऑफ हाइड्रोग्राफ क्या होता है? What should be area of hydrograph? A plus B by 2 into peak discharge. A plus B by 2 into peak discharge. तो ऐसा ज्यादा सोचना जरूरी नहीं. ट्रायंगल, ट्रेपेजॉइड, रेक्टेंगल डायरेक्टली ले लो ना बेटा, हो जाएगा. Why are you thinking all these things? Yes, simple trapezoidal formula. A plus B by 2 into peak discharge into 3600 cube. This is in hours. This is in meter cube per second. This is for conversion of hour to second. 1 hour is equal to 3600. Now that is equal to again area of catchment into ERF depth only ना. That is again equal to area of catchment into ERF depth. ये भी equalize करेगा ना बेटा. We also equalize that or not? A plus B by 2 into Q peak is equal to AC into ERF depth. AC into ERF depth. हो गया? चलो. अरे ये TT वर्ड तो बंद करना पड़ेगा. Yes, no, all right, okay. It's emotion. अरे बाबा, किसका इमोशन हो गया रे? आता गारू. आदर्श उपाध्याय खत्म हो गया. चलो ये तो क्वेश्चन है. ये तो ट्रेपेजॉइडल हाइड्रोग्राफ BRH 0, 60, ये दे रहा है 30. इधर तो ये निकलना पड़ेगा. वी हैव टू फाइंड आउट पीक डिस्चार्ज. क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट क्यू पीक इन मीटर क्यूब पर सेकंड. मीटर क्यूब पर सेकंड में क्यू पीक ढूंढना पड़ेगा. एरिया ऑफ कैचमेंट 120 किलोमीटर स्क्वायर. इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ 5 सेंटीमीटर. ड्यूरेशन 4 hours. 5 वैल्यू 4 mm per hour. सो क्यू पीक तो ढूंढना पड़ेगा. यू नीड टू फाइंड आउट क्यू पीक. क्या होता है टीबी? बोलो अभिषेक, क्या होता है रे बाबू? हाँ 60. सुनाओ. ए प्लस बी बाई 2 60 प्लस 30 बाई 2 इंटू क्यू पीक इंटू 3600. एरिया 120 इंटू 10 power 6. 0.05 मीटर इफेक्टिव रेनफॉल. अब तो क्यू पीक क्या आएगा? हाँ, दिस इज अननेसेसरी डेटा एक्चुअली. ये तो नॉट रिक्वायर्ड वाला डेटा, अननेसेसरी टू कंफ्यूज यू. ऑलवेज दे कैन गिव सम एक्स्ट्रा डेटा, एक्स्ट्रा चीज. आप पिज्जा ऑर्डर कर दिया अनवर, पिज्जा ऑर्डर करने के पहले बोल देंगे ना, यू आर गोइंग टू से अरे एक्स्ट्रा चीज दे दो बेटा. एक्स्ट्रा चीज डालेगा ना डालेगा? आप तो पिज्जा खाएगा ना. विदाउट एक्स्ट्रा चीज आल्सो यू कैन ईट सेम. दिस इज एक्स्ट्रा चीज है. बिना एक्स्ट्रा चीज आप क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे. 37.04 मीटर क्यूब पर सेकंड. नंबर 3, इरेगुलर शेप में कैसा होता है? इरेगुलर शेप होने के बाद इरेगुलर शेप ऑफ हाइड्रोग्राफ. एक काम करो, इरेगुलर शेप BRH लिखो.
irregular shaped DRH, irregular shaped DRH, यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल, irregular shaped DRH हो गया, टाइम इंटरवल तो यूनिफॉर्म दिया है. What is this irregular shaped DRH? So DRH is like this. ऐसा चलेगा DRH. So ऐसा चलने के बाद देखो, this is the T1, T2, T3, T4, T5, all values are same. Delta T uniform. So now volume is equal to sum of individual discharges into individual delta T. Is that possible? Na? Q1 T1, Q2 T2, Q3 T3. ये तो इरेगुलर होने के बाद हो जाएगा. ये तो सेम ना, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3. सिर्फ ये ऐड करो, सम ऑफ डिस्चार्जेस इनटू डेल्टा T. सम ऑफ डिस्चार्जेस क्या है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन इनटू डेल्टा T. हो जाएगा ना? Q1 plus Q2 plus Q3 and so on Qn into delta T. Because the time is said to be same. Time is said to be same. समझ आ रहा है? Is that clear? Completed writing. Completed writing. चलो. क्या हो गया? आटा गारू कैसा चल रहा है? नॉन यूनिफॉर्म टाइम ड्यूरेशन. नॉन यूनिफॉर्म टाइम ड्यूरेशन. हम क्या बोल रहे हैं इनको? डेल्टा टी वेरिएबल. डेल्टा टी वेरिएबल बोल रहे हैं इनको. डेल्टा टी ऐसा हो गया, देखो, दिस इज 2 आवर, दिस इज 3 आवर, दिस इज 1 आवर, दिस इज 1 आवर, 0.5 आवर, 0.5 आवर, 1 आवर. डिफर हो गया डेल्टा टी. सो अब तो ये आना पड़ेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू Q1 डेल्टा T1, Q2 डेल्टा T2, Q3 डेल्टा T3. ऐसा हो जाएगा Q4 डेल्टा T4. बट फॉर एक्यूरेसी बोल रहे हैं, इफ यू वांट वैल्यू, ऐसा लेने के बाद अच्छा हो जाएगा क्या? Q1 डेल्टा T1, Q2 डेल्टा T2 लेने के बाद अच्छा हो जाएगा क्या? 2 घंटा सेम डिस्चार्ज नहीं हो गया ना? 2 घंटा सेम डिस्चार्ज नहीं हो गया ना? हर एक सेकंड वेरी करके चल रहा है डिस्चार्ज. यू कैन टेक दिस एज ए ट्रायंगुलर एरिया A1. देन नेक्स्ट वन इज ए ट्रेपेजॉइड होता है ना, ट्रेपेजॉइडल एरिया A2. थर्ड वन इज A3, A4, A6, A7. हर एक इंडिविजुअल एरिया निकलना पड़ेगा. वॉल्यूम इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन AN. ये समझ आ गया? Q1 डेल्टा T1, Q2 डेल्टा T2, Q3 डेल्टा T3 अच्छा नहीं, एक्यूरेट नहीं मिलेगा हमको. सो इनका वजह से हम ले रहे हैं वॉल्यूम एज एरियाज. एरिया 1 मिलेगा, देखो एक बार, एरिया 1 हाफ इनटू टाइम बेस इनटू वैल्यू हियर Q1 वैल्यू. एरिया 2 मिलेगा A प्लस B by 2 इनटू Q वैल्यू. एरिया 3 मिलेगा A प्लस B by 2 इनटू Q वैल्यू. लाइक दैट हर एक वैल्यू निकलना पड़ेगा. हाँ सेम सुधागारो. एवरी एरिया, एवरी प्रोजेक्शन टू बी टेकन एंड कंसीडर द एरिया. हर एक प्रोजेक्शन लेके इनका हाइट मिलेगा ना, ये हाइट देखो एक बार. फॉर एग्जांपल वी हैव रिटन Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 ऐसा ले लिया. देखो ये वाला वी आर गेटिंग A4. A4 कैसा लिखता है? A4 इज रिटन, A4 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4 by 2 इनटू डेल्टा T4 हो जाएगा ना? एरिया मिलेगा ना आपको? A4 एरिया समझ आ रहे हो बेटा? दिस इज A Q3, B Q4, हाइट टाइम डेल्टा T4 हो जाएगा ना? लाइक दैट हर एक एरिया इंडिविजुअल A1, A2, A3, A4 ऐसा करके याद करेंगे वॉल्यूम. उधर ये डिस्चार्ज होता है, क्या होता है हमको पता नहीं. 2 बेसिस. ये तो ट्रेपेजॉइड शेप है, दैट इज अ ट्रेपेजॉइड शेप. इनका एरिया निकल रहा है A प्लस B by 2. ट्रेपेजॉइड शेप आ गया ना बाबू? So here to here A, here to here B, and this is a delta T. So समझ आ गया? अब A plus B by 2 into delta T. Clear? The watershed got transformed from rural to urban over a period of time. रूरल क्या होता है? विलेज वाटरशेड. विलेज वाटरशेड. अर्बन क्या होता है? टाउन और सिटी वाटरशेड. समझ आ रहा है? वाटरशेड और कैचमेंट. वाटरशेड मींस कैचमेंट होता है बेटा वाटरशेड. वाटरशेड इज नथिंग बट कैचमेंट. Catchment got changes from village to
town catchment or village catchment for a period of time. Effect of urbanization on storm runoff hydrograph. What is the change in DRH? What is the change in DRH for a village to town? What is the change in DRH for a village to town? क्या हो गया? Area of catchment will increase. Area of catchment increase ना. सुनो पहले, विलेज तो छोटा हो गया, टाउन तो बड़ा है. वी आर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कैचमेंट बिकॉज विलेज में कम पानी चाहिए, टाउन में ज्यादा पानी चाहिए. सो इनका वजह से एरिया इंक्रीज हो गया. देन व्हाट हैपेंड इफ एरिया इंक्रीजेस? Q is equal to CAA upon 360. So area increased. Q increased na? Q increased or not? Discharge will increase na? So you can cut down. Decrease in peak discharge. So discharge increase, volume also will increase. Volume also will increase. Discharge बढ़ गया तो volume भी बढ़ जाएगा. हमको ये पता है discharge is inversely proportional to time. पता है नहीं? I told you already about this. I told you very clearly discharge is always inversely proportional to time. So time count decrease हो गया, देखो time base decreases ना, time base decreases ना. So इधर भी decrease भी लिखना पड़ेगा. Peak discharge time also. Decrease the time to peak discharge. Decrease the time to peak discharge. That also. But increase लिख दिया. इनका वजह से आंसर तो C. रूरल टू अर्बन में C चेंज होगा. ऑब्वियसली डिस्चार्ज C बढ़ जाएगा ना बेटा. रनऑफ कोएफिशिएंट विल बी मोर फॉर अर्बन ना आशीष. C फॉर अर्बन ग्रेटर देन C फॉर रूरल. उधर भी डिस्चार्ज बढ़ गया, उधर भी डिस्चार्ज बढ़ गया. एनीवे इट कॉजेस डिस्चार्ज इंक्रीज ओनली ना. देखो बेटा, एनीवे डिस्चार्ज इंक्रीज ओनली ना. C फॉर अर्बन इज ग्रेटर देन C फॉर रूरल. डिस्चार्ज तो बढ़ गया. अरे ये बात बताओ, योर कैचमेंट इज ए पॉन्ड, यू आर एक्सकवेटिंग. विलेज में 5000 पीपल को पॉन्ड एक्सकवेट करेगा. सिटी में 20,000 1,50,000 पीपल को साइज तो इंक्रीज हो जाएगा ना कैचमेंट को, पॉन्ड को. एरिया ऑफ कैचमेंट कम होगा. सौरव गारू, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोग्राफ पीक डिस्चार्ज. हाइड्रोग्राफ पीक डिस्चार्ज के बारे में बात किया हम. दैट इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कैचमेंट बेस्ड फैक्टर का वजह से. दैट इज डिफरेंट ना. ड्रेनेज डेंसिटी का वजह से बात किया हम. डीडी ड्रेनेज डेंसिटी बेस्ड में. Jitin Garu, if you attend 2 lecture daily only, Jitin ji, if you attend only 2 lecture per day, it will take 1.5 years for you to finish the syllabus. So you can target 2026. If you target 2025, minimum 3 to 4 lectures you need to attend. Finish the syllabus early. Focus on revision, online test series, practice question. Your target must be October end तक syllabus खत्म करना पड़ेगा. Jitin. एक काम करो ना, ये नंबर को मैसेज करो, इंडिविजुअली पर्सनली बात करेंगे हम दोनों. अभी बात करने के बाद पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा. आप ये नंबर को मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, हम इंडिविजुअली बात करेंगे. आपका इंडिविजुअल कंडीशन ना, कन्वेंशनल फ्लो ड्यूरेशन का पोल में दे दो बेटा. ये तो पोल में दे दो. गुड मुसाविर, कहां चले गए आपका दोस्त मुसाविर? मुक्का गारू कहां चले गए? मुक्का जी. गुड मुसाविर, रैंडम, सौरव, निपुण, आशीष, इमरान, बबलू. गुड प्रशांत, गुड ऋषिकेश, मुक्कागारू, श्रीराग, अमन, वेरी गुड. डूब गए, कहां डूब गए रे बाबा? कन्वेंशनल फ्लो ड्यूरेशन कर्व इज ए प्लॉट ड्रॉन बिटवीन. ये तो हम बार बार बात किया. कन्वेंशनल फ्लो ड्यूरेशन कर्व, डिस्चार्ज वर्सेस परसेंटेज ऑफ टाइम ऑफ फ्लो एक्सीडेड. वी डिस्कस्ड दिस इन फर्स्ट चैप्टर, प्रेसिपिटेशन चैप्टर. You check after intensity, duration, frequency curve, idea of curve. We have written this. Flow, discharge, flow rate versus percentage of time of flow. An isolated 3-hour rainfall event. So isolated 3-hour rainfall, duration of rainfall 3 hours. Produces a hydrograph peak and point of inflection on falling limb. 7 hour, 8.5 hour. P peak. 7 hour. You understand this? This is 7 hours. This is the point of inflection D. Point of inflection D. This is 8.5 hours.
assuming no losses, no base flow contribution, time of concentration required, TC required. पता है TC? We have one formula, I hope so you remember. T peak is equal to TC plus D by 2. T peak is already given 7 hours. TC required, D is 3 by 2. What is TC now? Clear? Triangular direct runoff of a storm, time base of 90 hours. Peak flow discharge of 60 meter cube per second, which occurs at 20 hours from the start. Which occurs at 20 hours from the start. Area of catchment 300 kilometers square. Rainfall excess. Half into 60 into 90 into 3600. किसी को डाउट है इनके बारे में? हाँ, ये तो आसान हो जाएगा सुधाकर आपको के बाद। स्टेप वाइज प्रोसीजर पता होने के बाद मुश्किल हो जाएगा, बट फार्मूला पता होने के बाद ये तो आसान है। अरे आप क्या बोल रहे हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन माइनस डी। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज 8.5, डी इज 3 आवर। हर एक जगह में ऐसा होने का जरूरी नहीं, सोच लो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 10 घंटा लिख दिया इधर, देन आप क्या करेंगे? देन बोल रहे हर एक जगह में ऐसा आने का जरूरी नहीं बेटा, एवरी टाइम हैपनिंग इज नॉट पॉसिबल, डोंट कंसीडर दैट। Direct runoff hydrograph in response to 5 centimeter rainfall in a catchment is shown in the figure. Area of catchment. So what it is saying, this is a peak discharge, this is peak discharge, this is a time base. Simple. Half into 1 into 6 into 3600, area into 0.05. Area you are getting 21.6 into 10 to 4 मीटर स्क्वायर। सो हेक्टार में आएगा 21.6 हेक्टार। मिल गया? अरे आदर्श बच्चे चेक करो, एक बार चेक करो बच्चे आदर्श। ये क्वेश्चन है एप्टीट्यूड में दिया 2016 सेट 1 में, टेक्निकल नहीं। फर्स्ट 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड वाला रहेगा ना, फर्स्ट 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड वाला रहेगा ना। ये 10 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है। सो बिना हाइड्रोग्राफ के बारे में पता करने के बाद भी सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं। सिविल इंजीनियर को ये एप्टीट्यूड क्वेश्चन जैसा लगाना पड़ेगा। ये सॉल्व करो, मैं अभी आएगा 1 मिनट में, आप सॉल्व करो। सो चल रहे बी वाला आंसर। डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ड्यू टू आइसोलेटेड स्टॉर्म विद एन इफेक्टिव रेनफॉल ऑफ 2 सेंटीमीटर। इफेक्टिव रेनफॉल ऑफ 2 सेंटीमीटर। ट्रेपेजॉइडल शेप। एरिया चाहिए हमको, सिंपल। ए प्लस बी बाई 2, 90 इंटू 3600, एरिया इंटू 0.02। सो एरिया तो मिलेगा 599.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर स्क्वायर, 599.4 किलोमीटर स्क्वायर। मिल गया? मुक्का गारू डूब गया ना बेटा, मुक्का गारू पानी में डूब गया ना मुसाफिर, आइस में डूब गया, पानी में डूब गया? बोलो क्लैरिटी। एवरीवन गॉट द आंसर? Direct runoff hydrograph obtained from a storm is a triangular shape, base period of 80 hours. Triangular shape with base period of 80 hours. Discharge is 30 meter cube per second. So this is 30, this is 80. Area 86.4 kilometer square.
rainfall excess, half into 80 into 30 into 3600, 86.4 into 10 power 6 into ERF, 0.05 मीटर 5 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन तो आसान हो गया ना अभी, सो फार्मूला अच्छे समझ आ गया तो क्वेश्चन तो आसान हो जाएगा। चलो कंप्लीटेड। Triangular direct runoff hydrograph of a storm 90 meter cube per second, sorry 90 hour time base, peak flow 60, area of catchment 300. Same model, half into 60 into 90 into 3600, 300 into 10 power 6 into ERF. ये 20 आवर सिर्फ बाउंसर के लिए। क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन बाद में लिखो। ऐसा करना, इफ यू हैव ए पीडीएफ गेट क्वेश्चन बुक या पीडीएफ होगा तो ऐसा लिखो, गेट 2020 2 मार्क, आंसर सॉल्यूशन लिखो, हो जाएगा ना बेटा। गेट 2020 2 मार्क्स ऐसा रख के सॉल्यूशन लिखो, हो जाएगा। देखो क्या हो गया इधर, डायरेक्ट हाइड्रोग्राफ ड्यू टू storm over a basin, 90 hour duration, 0, 10, 70, 90, 40 and 0, 40 and 0, 0, 10, 30, 50, 90। रेनफॉल एक्सेस निकलना पड़ेगा, A1, A2, A3, A4, A5, ऐसा नो, and you have to write 10, 10, 10, 20, 40। सब तो A1 हाफ इंटू 10 इंटू 10, 50, A2 10 and 70 ना, 10 plus 70 by 2 into again 10, 350, 400, okay 400। then अब तो क्या है, 70 plus 90 ना, into 10, 800, A4 90 plus 40, 90 plus 40 by 2 into 20, 1300, A5 half into 40 into 50। What happened, Rahul? This is 40 now. Oh, this is also 40. 1 minute. This is also 40. Both 40 only. Both 40 only. Half into 40 into 40. 800. So volume क्या हो रहा है? 50 plus 400 plus 800 plus 1300 plus 800 into 3600। ये तो करना पड़ेगा ना लास्ट में, हर एक चीज के लिए नहीं कर रहे, बट एट द एंड वी हैव टू डू इट। एट द एंड वी हैव टू डू इट। 12.06 into 10⁶ मीटर क्यूब डेप्थ मिलेगा। वॉल्यूम बाई एरिया, क्लियर टू एवरीवन? समझ आ रहे बाबू? इतना लंबा क्वेश्चन भी फटाफट कर दिया। देखो ज्योमेट्री आना पड़ेगा, बस हो जाएगा क्वेश्चन फटाफट। किसी को डाउट है? सत्येंद्र गारू नींद में चल रहे क्या? अरे आटा वाला बच्चे कहाँ है? मिस्त्री, एवरीवन से समथिंग। अरे आइसक्रीम मत बोलो रे बाबा, हमारा वेट बढ़ जाएगा आइसक्रीम खाने के बाद। मिस्त्री को कल तो खाना बंद किया ना संडे, आज तो थोड़ा देना पड़ेगा, कल कुछ नहीं दिया ना। डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ ए 4 आवर स्टॉर्म, रेनफॉल ड्यूरेशन डी 4 आवर। ये तो आप याद रखो, एंटायर हाइड्रोग्राफ में रेनफॉल ड्यूरेशन टी नहीं डी, डी लेना पड़ेगा। ट्रायंगुलर शेप, बेस पीरियड 60 आवर, कैचमेंट एरिया 400 किलोमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर रेनफॉल अकर्स, 4 आवर ड्यूरेशन। पीक फ्लो निकलना पड़ेगा, पीक फ्लो वी हैव टू फाइंड आउट पीक फ्लो। फाइंड x 1 mm per hour, बेस फ्लो 10 मीटर क्यूब पर सेकंड। चलो इफेक्टिव रेनफॉल 4 minus 0.1 into 4, 3.6 सेंटीमीटर, हाफ इंटू
60 into 3600 Q peak, 400 into 10 power 6 into 0.036. So what are you getting here? Q peak. But a Q peak for DRH. Q peak for DRH. Storm पूछ रहे देखो एक बार storm. So for storm, Q peak. Base flow तो ऐड करना पड़ेगा ना मधु? We have to add base flow or not? So 143.33. अरे किसी को ऐसा मत बोलो, मर जाएगा निपुण गारू. ऐसा कुछ कोड लैंग्वेज में बोलने के बाद तब मिलेगा आपको निपुण जी. क्या बोल रहे हैं 143? किसको बोल रहे थे बाबू? बहुत ज्यादा डेंजर कोड है. 143.33 मीटर क्यूब पर सेकंड. चलो क्वेश्चन तो ऐसा होना चाहिए बेटा निपुण जी, बट 143 देने के बाद तो सोचना पड़ेगा. एक्सेस रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ एरिया 10 किलोमीटर स्क्वायर. स्टॉर्म ड्यूरेशन 6 आवर. टाइम ड्यूरेशन डी. ये 10 किलोमीटर स्क्वायर. ट्रायंगुलर शेप वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सा शेप में आ रहा है? कौन सा शेप में आ रहा है? ट्रायंगुलर शेप में. डिस्चार्ज 10 मीटर क्यूब पर सेकंड. बेस लेंथ 20 आवर. रेनफॉल एक्सेस चाहिए. अभी आंसर 3.6 सेंटीमीटर. तो ये देखो, DRH due to a storm over a basin as a time base, वो तो हो गया ना ऑलरेडी. दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड ऑलरेडी. This one. Direct runoff hydrograph due to a storm idealized into triangular shape. Peak flow 60. Triangular shape. Peak flow 60. Occurring at 25 hours from its start. Base width is 72. Catchment area this much. Runoff चाहिए. हर एक क्वेश्चन सेम मॉडल रहता है ना, खुशी रहेगा हम. देखो हर एक साल आ रहे क्वेश्चन 11, 12, 14. मोस्टली एवरी ईयर दे हैव गिवन दिस मॉडल. चलो कंप्लीटेड एवरीवन. ये पोल में दे दो ना. गिव इन द पोल, गिव इन द पोल. गुड आशीष, अनवर, मेसी अंकुल, इमरान, ऋषिकेश, मधु, नवनीत, निपुण, श्रुति, अमन, मुसाफिर गारू, अभिषेक, दिव्यांशु, श्लोक, सौरव, ज्ञानेंद्रा. अरे आटा अंकुल मर गया क्या? कहां चले गए आटा गारू? आज भी बंद करना पड़ेगा आपका आटा. नो ये क्वेश्चन अभी तो आराम से हो जाएगा निपुण. आएगा ना. देन नेक्स्ट यू गेट यूनिट हाइड्रोग्राफ. नेक्स्ट यू गेट एस हाइड्रोग्राफ. नेक्स्ट कंबाइंड हाइड्रोग्राफ. देन एग्जाम में चलने के बाद पूरा आएगा. दिमाग में हर एक चीज चल रहा है. डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ एक साइड आएगा, दूसरा यूनिट हाइड्रोग्राफ आएगा. ऐसा कंबाइन होने के बाद सब्जेक्ट मिक्स हो जाएगा. सो आपको क्लैरिटी में पता करना पड़ेगा व्हाट इज गिवन, व्हाट टू टेक, देन इट विल बी इजी फॉर यू. सो रिसेशन लिंब को क्या हो जाएगा रे आटा गारू? रिसेशन लिंब डिपेंड्स ऑन कैचमेंट कैरेक्टर्स ओनली. यस्टरडे इतना अच्छे से लिख दिया ना. वी हैव रिटन वेरी वेरी वेल यस्टरडे. राइजिंग लिंब एंड क्रेस्ट सेगमेंट डिपेंड्स ऑन बोथ कौन होता है? राइजिंग लिंब, क्रेस्ट सेगमेंट. ओनली कुछ नहीं मिलेगा इधर. चलो सॉल्व. हम तो रेस्ट ले रहे हैं, आप सॉल्व करो, बताओ आंसर. आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग. आप बताओ बेटा. एवरीवन सॉल्व. शैल वी मूव? किसी को सॉल्यूशन चाहिए? नोबडी नीड्स ना.
चलो ये सॉल्व करो, डू दिस वन। अरे उपाध्याय गारू कहाँ है बेटा? आदर्श उपाध्याय ठीक है ना? अरे चेक करो 10.8 आ रहे, बी नहीं, मिलीमीटर में बोलना पड़ेगा। देखो एक बार, आप सेंटीमीटर में बोल दिया, आप सेंटीमीटर में बोल दिया, आंसर तो मिलीमीटर में देना पड़ेगा। क्लियर टू एवरीवन, शैल वी मूव? हो गया? टाइम वर्सेस डिस्चार्ज गिवन, कांस्टेंट बेस फ्लो 6 मीटर क्यूब पर सेकंड, रेनफॉल एक्सेस इन सेंटीमीटर, टेक कैचमेंट एरिया 50, इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ निकलना पड़ेगा, रेनफॉल एक्सेस सेंटीमीटर में। सॉल्व हो रहा है? So what is given? Most important here. Given is a flood. How many of you not noticed this? How many of you not noticed this? Flood hydrograph. Base flow given 6 meter cube. So we can get DRH discharge 6 minus 6 0, 18 minus 6 12, 30 minus 6 24, 24 minus 6 18, 12 minus 6 6, 8 minus 6 2, 6 minus 6 0. So how many of you not taken this? गलत हो जाएगा क्वेश्चन ऐसा नहीं लेने के बाद। 0, 12, 24, 18, 6 2 0. And delta T is uniform ना, 6 hour. So अब तो कैसा हो जाएगा? वॉल्यूम सम ऑफ डिस्चार्ज इनटू that is equal to area into depth. So how many of you not used this formula? दूसरा पीक वैल्यू लेके ट्रायंगुलर कौन ले लिया? by taking peak value how many of you did triangular? ऐसा ना करना पड़ेगा बेटा, सम ऑफ डिस्चार्जेस लेना पड़ेगा। 12 plus 24 plus 18 plus 6 plus 2 into 6 into 3600, एरिया 50 किलोमीटर स्क्वायर, इफेक्टिव रेनफॉल निकलना पड़ेगा। अब क्या है? एमएम सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बेटा? यस ऑब्वियसली ऐसा भी करना पड़ेगा ना। देखो स्टार्टिंग वैल्यू में कुछ दिया है, दैट इटसेल्फ विल बी बेस फ्लो। निपुण गारू, स्टार्टिंग वैल्यू में कुछ दिया है ना वैल्यू, दैट विल बी बेस फ्लो। सो 6 minus 6 0, 0 से शुरू करना पड़ेगा। क्लियर टू एवरीवन, शैल वी मूव गाइस? पोल में दे दो, पोल में। गुड ऋषिकेश, मेसी अंकुल, सौरभ स्लोप, इमरान, सियोना, अमन, नवनीत, जुवेरिया, आदर्श, ज्ञानेंद्र, मुकरम, मुसाविर। अरे साथ साथ में आ गया दोस्त लोग। मुकरम, मुसाविर, सिराज, सिंधु, दिव्यांशु, अनवर, मधु। वेरी गुड बबलू, गुड आयुषी। अरे हो दोस्त हु गेव एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन का मीनिंग पता है आपको? एक्यूमुलेशन का मीनिंग बढ़ गया, रिसेशन लिंक में कुछ बढ़ गया क्या? रिसेशन लिंक में डिक्लाइन होता है, डिप्लीशन ऑफ स्टोरेज बोलना पड़ेगा रिसेशन लिंक को। गुड आशीष, सियोना, अमन, मधु, ऋषिकेश, निपुण, मेसी, सिंधु, आयुषी, मुसाविर, वेरी गुड, जुवेरिया, आदर्श, दिव्यांशु, हर्ष, श्रीराग, रैंडम, वेरी गुड। टाइम ऑफ ओवरलैंड फ्लो इफेक्टेड बाय, सो दिस इज कैचमेंट, कैचमेंट का अंदर पानी है, दिस इज ओवरलैंड फ्लो, यहां से पानी आ रहा है। सो दिस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ दिस पाथ, स्लोप ऑफ दिस पाथ में, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, डिफर हो जाएगा ना। सो स्लोप एंड लेंथ ऑफ द पाथ।
ఆదర్శ్ బచ్చే, ఋషికేష్ గారు, హర్ష గారు, బబ్లు, లక్ష్మి, గుడ్ ముసబిర్. అరే దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ इंडिविजुअल वाला, they are asking simply hydrograph. Simply hydrograph means total ना, means it will talk about runoff and time. ये तो पूरा का पूरा में बात करेंगे ना. If you say runoff, runoff is a sum of surface runoff, subsurface runoff, groundwater runoff. So surface भी लेना पड़ेगा, ग्राउंड वाटर भी लेना पड़ेगा, रेनफॉल तो नहीं ले लेंगे. दोनों में लेने के लिए कैसा आएगा आंसर? रनऑफ वर्सेस टाइम ना. आदर्श गारू, बाबू मुसाफिर, ऋषिकेश हेमेंडे, समझ आ रहा है? रनऑफ एंड टाइम. हाँ पोल गलत है. दिव्यांशु पोल इज रॉन्ग. अरे पोल इज रॉन्ग बेटा, ये इज करेक्ट, ये इज करेक्ट, पोल तो गलत है. We discussed about two shades only ना. In the class we discussed about fan and fan only. ये बाल गारू कौन रे? बाहर आ जाओ. बाल वाला कौन रे बाबा? Who is ball shape? Come on. Ball shape कौन है बेटा? So always fan shape will give you correct answer. Large runoff. सुधा गारू से एक आंसर भी करेक्ट नहीं हो गया अभी तक. अरे ऐसा क्यों कर रहे बाबू? ये तो बहुत अच्छे से लिख दिया ना नोट्स में हम. कुछ क्या है? ज्यादा बोलो, ज्यादा बोलो. ड्रेनेज डेंसिटी, डिस्चार्ज पर एरिया, डिस्चार्ज कभी भी नहीं ले लेंगे, रॉन्ग. एनुअल बोल रहे, ईयरली, ईयरली के बारे में कुछ नहीं है. नंबर ऑफ स्ट्रीम्स पर यूनिट एरिया, ये तो स्ट्रीम डेंसिटी. स्ट्रीम डेंसिटी होता है ना नंबर ऑफ स्ट्रीम्स पर यूनिट एरिया. क्वेश्चन इज एवरेज लेंथ ऑफ स्ट्रीम पर यूनिट ड्रेनेज एरिया, एल बाई ए. ड्रेनेज डेंसिटी होता है, समझ आ रहा है? स्ट्रीम डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है बोलो? स्ट्रीम डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम होता है. भैया यू गिविंग ऑप्शन ये वाला कौन है? कौन दे बाबा ऑप्शन ये वाला? वेलोसिटी को दे ड्रेनेज डेंसिटी का बारे में. ये तो ऑलरेडी सॉल्व किया. An isolated 2-hour rainfall event of small catchment produces hydrograph peak and point of inflection. Peak 6 hour, point of inflection 7 hour, rainfall duration 2 hour. Time of concentration will be. और किसी को डाउट है इनके बारे में? बोलो फटाफट. ये तो हो गया ऑलरेडी. डन ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस वन. चलो टुमारो विल टॉक द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यूनिट हाइड्रोग्राफ. यूनिट हाइड्रोग्राफ ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कल बात करेंगे इनके बारे में. ठीक है? एनीथिंग बोलो. आदर्श गारू कुछ बोल दिया, पूछ लिया, बोल दिया, ज्यादा बोल दो. अभी तक कुछ नहीं बोला. क्या हो गया उपाध्याय? चलो जल्दी चलो, आइसक्रीम खाओ. सो इवनिंग एयर पोल्यूशन क्लास इज देयर बेटा. एयर पोल्यूशन में वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा. क्लास बंद मत करो, आ जाओ क्लास पे टाइम पे. अरे यू आर नॉट हैबिचुएटेड फॉर 2 आवर क्लास. इमरान गारू 2 घंटा तो करना पड़ेगा, सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा हमको. ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय.